screen is visible now. Great. So let's just begin. Last lecture, I suppose, since the time we have started our sessions, we have finished up revising mensuration and then we took up AP, arithmetic progression. And I think we decided to take trigonometry now, right? Take up trigonometry. Yeah. Okay. So we'll take up Sir, trigonometry I now. have a doubt, sir. Yes, Vedant, please tell me. Sir, can I read it, sir? Yeah, please go ahead. From which chapter is it out? Sir, AP. Please go ahead. Please go ahead. The sum of 4 consecutive numbers. Okay, in wait. AP. Let me just write it somewhere. Wait. Let me write it on the screen so that everyone knows. और बाकी सब आप लोग भी जब जैसे ये क्वेश्चन रीड आउट कर रहा है ना, सिमिलरली यू विल बी रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर. सो जब भी आप क्वेश्चन पेपर से रीड करते हो, always make a habit of listing down useful information from the question. Okay, and how to do that? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो please listen how we are doing, or please see the screen how I am doing it. And Vedant, please start. Yeah, 4 consecutive numbers. The sum of 4 consecutive numbers in AP is 32. Okay. And the 4 ratio... consecutive numbers of AP. Yes, sir. Okay. Is how much? 32. 32. Okay. And the ratio of the product of the first and last term to the product of 2 middle terms is 7:15. Find the numbers. Ratio of the product of just one. Ratio of the product of first and the last number, that means A1 is into A4 divided by A2 into A3. Yeah, how much is this? 7:15. 7:15, or I can write it as 7/15. Yes, sir. Everyone in the class understands. Yeah, find the numbers. I get that. So everyone in the class understands the question and understood how I found these out. I mean, how I wrote down the important part of the question. Is this much clear to all? Yes, sir. Okay. So are these now consecutive? No, numbers are not consecutive. That means they are not consecutive natural numbers. They are consecutive terms of an AP. Okay, sir. Okay. Now in this, we have 2 ways to go ahead with this question. Step number 1, a very general or basic way. Yeah, you guys try. I'm just telling you the 2 ways which are possible. One is a general way in which you can take the first term as A, so that your next term becomes A plus D, your third term becomes A plus 2D, and your fourth term becomes A plus 3D. So you replace these values in the first given information, you replace the values in the second given information, and you'll get 2 equations in terms of A and D. Solve them simultaneously, get the answer. The second method is, there is a concept of selecting terms for an AP. Did I tell you about this concept in the last lecture? No, sir. Okay, so I'll just give a brief idea about it. So whenever I want to select numbers in an AP, let's say for example, I want to select 3 numbers in an AP. How do we do that? Instead of taking A plus D and A plus 2D, just think, if I took the numbers as A minus D, A and A plus D, won't it be much better? Because in this scenario, if there is a information about addition, D will get cancelled and I'll directly get the value of one of the variables, right? Are you understanding the trick used? Yes, sir. Yes, sir. And common difference still remains same, D. Sir, but there are 4 terms. Yes, coming to that. So now for 4 terms, the problem is, if I take A minus 2D on the left, or I take A plus 2D on the right, it defeats our purpose. You know, it will be counterproductive. It will not help us because D will not get cancelled out. तो अगर D cancel out नहीं होता तो करने का फायदा ही क्या है? So ऐसे केसेस में हम क्या ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? We take the terms as A minus D, A plus D,
and a plus 3d. इस केस में ये बस याद रखना, the common difference becomes 2d, but still it's an AP, क्योंकि डिफरेंस है तो सेम, भले वो d की जगह 2d है बट सेम है. अगर 5 टर्म्स का क्वेश्चन आ जाता है तो वी यूज द 3 टर्म्स वाला लॉजिक, और एक टर्म लेफ्ट में एक टर्म राइट में लगा देंगे, एंड वी विल गेट a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. So do I make sense? Do you all understand this logic behind doing everything, behind doing this, taking these terms? Okay. So your second case, or the second way to solve this question is this. Take the first term as a minus 3d, take the second term as a minus d, take the third term as a plus d, and take the fourth term as a plus 3d. So why did we take a minus 3d and a plus d? Why did we not take a minus 3d, comma a minus 2d, comma a minus d? Because I wanted 4 terms such that during addition the d part gets cancelled up. Sir, so that was possible only in this case. In this case, sir, we are not getting these as consecutive, right? Because they are a minus 3d, then a minus d. It doesn't. Yes, so that's what I'm saying. If I consider the common difference as 2d, oh, okay, then these becomes consecutive, na? Yes, sir. Yes, sir. Right? That is the logic I'm using here. Okay, sir. So go ahead, use any of the 2 methods. Please do not prompt answer. You can message the answer in over personal chat, and we'll wait for 2-3 minutes, and then I'll solve this question. I think I'll start solving now. I didn't get a reply from lot of students, but I've got like 5-6 replies. So I think I'll make peace with that, and let's see how this is solved. So my personal favorite obviously will be the second method. So I'm going ahead with the second method. So by using the first information, I know that a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is equal to 32. All the d terms will get cancelled up,
So I get 4a is equal to 32, which gives me a as 8. Once I get the value of a as 8, let's take the second information. So a1, that is a minus 3d, will be 8 minus 3d, multiplied with a4 is a plus 3d, that will be 8 plus 3d. One more benefit is, in such product questions, you can apply a square minus b square or a plus b a minus b formula. So that is one more benefit of doing this. And in the denominator, a2, a3, I will get 8 minus d and 8 plus d. That is equal to 7 by 15. So if I apply the formula, I get 64 minus 9d square. I hope you all understand how I did this. It was a plus b, a minus b, which becomes a square minus b square. Am I audible to all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, cool. And in the denominator, again, it would be 64 minus d square, which becomes 7 by 15. So when I cross multiply, I get 64 into 15. And 64 into 15 will be 640 plus 320, that is 916. Minus 9 into 15, that is 135. D square is equal to 7 into 64. That will be 7 into 60 is 420 and 448. Please correct if I'm wrong. So now let's take this 448 on the left hand side. So 960 minus 448 will be 512, and this 135 will become positive on the right hand side. So 135 minus 7 will be 128 d square. So I suppose d square becomes 4, because of which d becomes 2. So once I get d as 2, or plus minus 2 actually, so therefore the terms become, so terms were a minus 3d, that means 8 minus 6, that is 2, and then 2d is the common difference. So therefore 4 will be the common difference. So the terms will be 6, 10, 14. If I would have taken d as minus 2, I would have got 8 plus 6. That means I would have started with 14, then I would have got 10, 6, and 2. So in your exam, you write both of the sequences as answers. So this is your answer: 2, 6, 10, 4, or 10, 14, or 14, 10, 6, and 2. Sir, Yes. so briefly, you first found the value of a as 8 Yes. by adding them. Then Mm-hmm. you did multiplication of the first and the last one, that is 8 into 8 plus 3d upon like that you did. Sorry, I couldn't hear the last part. Sir, then you wrote it in the form of that product and you just cross multiplied it with 7 upon 15. Then you got the equation, right? Hello? No, I still didn't understand what exactly you're trying to ask. Sir, I'm trying to ask that after finding a as 8, Hmm. you Right. wrote it in the form of that ratio 1, the second expression that is given in the question, and then you Okay. cross multiplied it with 7 upon 15, right? Yes. Okay, sir. Yes. I used this information. I just substituted the values of A and these values which I took, which I assumed. Answer the terms you took it as a plus 3d, sorry, a minus 3d, a minus d, like that, right? A minus D, A plus D, and A plus 3D. Yes. Sir, one more thing. Your voice was cutting. But this term is not consecutive, no? No, so that's what I'm saying. Consecutive means it was consecutive terms of an AP. अब जैसे ये AP है तो ये AP तो चार terms का नहीं है ना. यहाँ पे there would be 18, 22, 26, 30, 34 ऐसे चलता रहेगा ना आगे. Yes, sir. Right? But these four are the consecutive terms of that AP. वो AP के consecutive terms है. वो consecutive natural numbers नहीं है. ऐसा कहीं नहीं लिखा था. Okay, sir. Okay, understood. Got it?
So okay, you understood this much, right? Yes, sir. And there's one more question in chat. I think we'll take that up also. Everyone, it's on personal, it's on the complete public chat, so everyone can read that question. Please go through it. So can you please resend it? I'm just reading it out. Just a minute. 2 people are joining. From the next time, please join by 7:30. 5 minutes plus minus is understandable. But please don't join 25 minutes post the lecture. Yeah, so I'm reading out the question. In a flight, who has sent this? Vedant has sent this. In a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. This question is not based on AP, Vedant. This is another question based on linear equation. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, This is based the on another linear question, equation sir. in 2 variables. Yes. So, Sir, ठीक it's है, so now quadratic equation. Yeah, quadratic equation can be solved with linear, can be solved with quadratic. Okay. So, ठीक है, we'll take that up. अब हमने पढ़ लिया है, तो we'll take this question up. Sir, Okay. could you please tell how to do it by linear equation with two variables, because I Can't just hear know. you. Sorry, is that my? Sir, Okay, can wait, you hear me just now? hold on, just hold on, just hold on. Yes, I can hear you now. Sir, should I repeat what I said? Yes, please. Sir, I asked you to tell the method of the one with linear equation with two variables, because I haven't solved any question like this with two No variables. problem. No problem. No problem. I've just Thank you, sir. pasted the question on the group if everyone can see that. So in a flight of 600 kilometer, okay, so we are actually deviating from the topic, but I suppose AP is anyways done and we have to start with a new chapter, which is trigonometry. So in the meantime, just as a, what you say, as a filler, we'll just take this question up and then we'll go to trigonometry. So in a flight of 600 kilometer, so the distance remains same. Distance is 600 kilometer in the first case. Distance is 600 kilometer in the new case, original and new. Okay. एग्जाम में भी आप लोग क्या किया करो, इस तरीके से अपने पास डेटा बना लिया करो. इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड एरर्स भी नहीं होंगे. मैं बताता हूँ कैसे. क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड. सो ऑब्वियसली देयर आर थ्री थिंग्स, डी, एस एंड टी. ओके. अब ओरिजिनल स्पीड कितनी थी वो हमें पता नहीं है. सो ओरिजिनल स्पीड को एस ले लेते हैं. The average speed was reduced by 200 kilometer per hour. That means यहाँ पे speed will become s minus 200. Am I right? Do you all understand this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Original time को अगर हम t ले लें, तो the new time will become t plus half. Why half and why not 30? Sir, Half because hour. it is in the form In of kilometer per hour. Right, because it's in kilometer per hour. So now I know a relation between s and t. Because distance is equal to speed into time, I know that s into t has to be 600. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now, I also know that s minus 200 multiplied with t plus half should also be equal to 600. Yes, sir. Yes, sir. Right? So please use these two information. These are two informations based on s and t. Two information, two variables. You can obviously find the answer. So take 2 minutes of the time and please try to figure this out. The hint is solve these brackets first. Open up these brackets, get an equation in terms of s and t, and then replace, use substitution method and replace in one of the equations. Take 2 minutes, try it out.
Sir, we know that the distance is equal to speed into time, that is s into t. Sir, while we multiplied, sir, we are getting s t. Sir, so can we cut it? Right. Subtract it on both the sides. Yes, yes, I understood. If I understood what you asking, yeah, you can do that. Go ahead, go ahead, go ahead. 2 minutes, just focus and try it on yourself. By yourself. Sir, I got 1 hour by quadratic equation type means, but doing linear equation I am not able to solve forward after once means after cancelling that ST. Okay. So, okay, let's start. Over here, if I open the brackets, I get Sir, we are ST only. plus Sir, we are S by only. 2. Excuse me, sir. Yes, yes, please tell me. Sir, we are only given one case, right, in which the speed is reduced by 200 kilometer per hour and the time is Yes, increased by. Sir, so yes, how can we yes. get two equations with this only one Yes, case? sir. One equation we got, sir, but Yes, another sir. So we equation. Yes, can. yes. Coming to it, coming to it, Sir, coming I to it, got coming two to it. answers. ठीक है, let me come to it. Let me come to it. Now, ST की value हमें already पता है कि ST is 600, so I can definitely cancel these two. So now I know that S by 2 minus 200t is equal to 100. Or I can say S minus 400t is equal to 200. Am I right? Do you understand this much? Yes, sir. I understood. Yes, sir. So next thing, from this, can I say S will be equal to 200 plus 400t? Yes, sir. Now, can I replace this value of S in this equation 1? So that is x I y is get 200 plus 400t whole getting multiplied with t becoming equal to 600. So this will be 400t square plus 200t minus 600 is equal to 0. This becomes 4t square plus 2t minus 6 is equal to 0. I have cancelled by 2 here. Okay, no, my bad. 2t square plus t minus 3 is equal to 0. So I need two numbers whose product is minus 6 and addition is plus 1. Plus 3 minus 2. Right, plus 3 minus 2. So I can take minus 2t plus 3t minus 3 is equal to 0. So the two brackets will be, यहाँ पे t minus 1 आ रहा है, यहाँ से 2t plus 3 आएगा. So t की दो values आएंगी, एक होगी minus 3 by 2 and the other will be 1. Now as t is time, t cannot be negative. तो आपको वो लिखना है. Time cannot be negative. Therefore, t will be equal to 1 hour. And when t is equal to 1 hour, वही पूछा था ना कि और भी कुछ पूछा? Original duration Yes, only. sir. Original time. Yeah, find the original duration. So original duration of the flight is 1 hour. 1 hour. Okay, sir. Is this clear? Do you all understand this? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, cool, no problem. So moving ahead then, let's start with trigonometry.
Yes, sir. Yes, sir. Sir? Yes. No, sir. Sir, nothing. I thought that t is equal to 3/2 you got. That's why. Achha, achha. No problem. -3/2, I suppose it was. So we come to trigonometry now. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले ना थोड़ा सा इट वोंट बी जस्टिस टू ट्रिग्नोमेट्री अगर हम थोड़ा सा माहौल ना बनाए, ठीक है? सो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के पहले देयर विल बी अ स्मॉल 1 minute pep talk which I want to give it to you. So ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, आपको नहीं आती है, यू कंफर्टेबल विद इट, यू नॉट कंफर्टेबल, यू हैव स्टडीड इट, यू हैव नेवर स्टडीड इट, व्हाटएवर द सिनेरियो इज. Point 1, trigonometry will be useful and you will have to use it without any other option for till all the grades or till all the years you study maths. आप 11th-12th में मैथ्स ले रहे हो, आप आगे जाके ग्रेजुएशन में either you taking engineering, you're not taking engineering, in any scenario you will be studying maths. अगर आप engineering लेते हो तो at least like the first 2 years on an average you study maths. So you study maths, जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे इन फिजिक्स. सो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ मैथ्स में काम आएगी, ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में भी काम आएगी और वो ऑप्शनल भी नहीं होगा. सो दिस इज वन थिंग व्हिच आई वांट यू ऑल टू नो कि ट्रिग्नोमेट्री से बचने का कोई रास्ता नहीं है. तो ये मत सोच के बैठना कि सर ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर में सोच रहा हूँ ऑप्शंस में छोड़ के जाओ. प्लीज डू नॉट डू दैट. ओके. सेकेंडली, ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम, कि उसमें कई क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ पाता कि सर उसमें हमने 4-5 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है. और क्योंकि काफी सारे नाम हैं, बहुत सारी नई नई चीजें ऑल टुगेदर आप पढ़ते हो तो इसलिए भी आप कंफ्यूज हो जाते हो. सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन द एंटायर चैप्टर इन द नेक्स्ट 15 minutes. एंड अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना तो ट्रस्ट मी 15 minutes and this entire chapter will become one of the most easy from one of the most difficult for you. So I would like to have 15 minutes of what you say undivided attention. Okay, can I get that? Yeah. Yes, sir. So 15 minutes, just pay attention and trigonometry will be a piece of cake, trust me. Okay. Now let's start. So before we start with trigonometry, what does this mean? What do you mean by trigonometry? So, and also I do not want any answers. When I say what do you mean, मैं खुद ही आंसर कर दूंगा, तो आप चिल मारो. सिर्फ सुनो मैं क्या कह रहा हूँ अगले 15 मिनट. Then I'll ask questions, many questions. So trigonometry basically is divided in these two words: trigon, which means a triangle, and metry, which means study or science. So it's a science or study of triangles. Okay. Now, when I talk about triangles, हमें सबको पता है ये बेसिक चीज कि every triangle has 3 angles and 3 angles, 3 vertices. Vertices का ऐसा कुछ काम नहीं है. So I can say 3 angles and 3 sides. एक चीज मैं आपके फर्दर रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि ट्राइंगल में हम हमेशा जो भी वर्टेक्स का नाम लिखते हैं हम उसकी अपोजिट साइड को सेम लेटर से डिनोट करते हैं इन स्मॉल. So I will denote the side BC, the length of small a. AC will be denoted by small b and AB will be denoted by small c. Okay, this is how we denote. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा when you studied Heron's formula. अगर आपको टीचर ने इस तरीके से conceptually पढ़ाया था तो, otherwise questions में तो नहीं काम आता. But anyways, so this is one basic logic about a triangle. Okay, basic information. यहाँ पे trigonometry involved नहीं हुई है. ट्रिग्नोमेट्री अब इन्वॉल्व होगी क्योंकि आपके पास 3 एंगल्स और 3 साइड्स हैं. इन्हें आपस में रिलेट करना हो तो कैसे करेंगे? दैट इज ट्रिग्नोमेट्री इज द आंसर. सो यूज ट्रिग्नोमेट्री फॉर रिलेटिंग एंगल्स एंड साइड्स. फॉर्चुनेटली in standard 10 in your current syllabus
we only study trigonometry for a right angle triangle. So whenever we have a right angle triangle, let's say this is our right angle triangle, and I name this triangle as A, B, C. So by the logic which we just studied, this length will be B, this length will be small a, and this length will be small c. And this is 90 degrees. Now, we denote any one of the angle as theta. This is a symbol which we usually use for denoting any angle. Okay? So this angle is theta. Now, there are different books which use two different sets of words. One is some books use opposite, adjacent, and hypotenuse for referring the sides. There are some books which use perpendicular, base, and hypotenuse. I personally suggest always go for opposite side, adjacent side, and hypotenuse. I'll tell you why. Because by that logic, you will never make a mistake in identifying which sides are to be considered. परपेंडिकुलर बेस वाले कंसेप्ट में एक प्रॉब्लम आता है, मैं बताऊंगा क्या. उसके पहले हम इस पे आते हैं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं. इफ आई टेक दिस एंगल एज थीटा, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे तीन साइड्स हैं, ये तीन साइड्स को हम कुछ ना कुछ कहेंगे. तो सबसे पहले हाइपोटेनियस, आप सब लोगों को पता है क्या होता है, क्योंकि आप सब लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है पहले. सो हाइपोटेनियस इज अ साइड Yes, the which is side opposite opposite to 90 right degree. angle. Right. So therefore AC is our hypotenuse. Then I name one of the other two sides as opposite side. तो इतनी इंग्लिश तो हम बचपन में ही पढ़ चुके थे कि अपोजिट मतलब क्या होता है, हमें पता हो. सो देयरफॉर थीटा का अपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली AB होगा. अब अगर ये दो हो गए और अगर मैं कह रहा हूं एडजेसेंट साइड बताओ, तो हर एंगल के लिए एडजेसेंट में या तो हाइपोटेनियस होगा, जो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं. तो बचा क्या? तीसरी साइड, इस केस में BC. So these are the three sides. Now, let's come to the next topic. This topic is introduction of the 6 trigonometric ratios. अब यहाँ से थोड़ी proper trigonometry शुरू हो रही है. Please pay attention. 10 more minutes and the entire chapter is done. Please pay attention. Trigonometric ratios. अब 6 trigonometric ratios हैं जो आपको पता होने चाहिए. क्या है वो? Sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant. Now we're not getting into the geometry of this. ये words हैं. अब ऑब्वियसली बात है कि यार इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं, तो लोगों ने सोचा कि यार कौन इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज करेगा. मतलब इट्स नॉट लाइक यू एंड मी आर द ओनली लेजी पीपल इन द वर्ल्ड ना. सो उन्होंने बोला कि यार क्यों इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, इनको ना शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, निक नेम कर देते हैं, है ना. सो निक नेम आज ट्रेंड में नहीं है, सालों से ट्रेंड में है. सो वी यूज द फर्स्ट 3 लेटर्स. सो साइन becomes, it's called as sine, but it's written as sin. Please do not pronounce it as sin. Sin is something different which we should not commit. Next is cos. यहाँ पे लोग मिस्टेक नहीं करते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन में. Then we have 3 letters tan. Then the 3 letters give me cot. Then the 3 letters give me sec. Then the 3 letters give me again cos. तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई कि यार 2 बार cos आ गया. E को लिया तो कोसे. Now कोसे doesn't sound good. So उन्होंने क्या सोचा, एक काम करते हैं 5 ले लेते हैं. So let's go for cosec. So these are the 6 trigonometric ratios. Okay. अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनका कोई मतलब नहीं है जब तक इसके साथ कोई एंगल नहीं लिखा होता. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं कहीं पे लिख दूं 6 प्लस, अब इस प्लस का कोई मतलब है क्या? जब तक मैं इस प्लस के आगे एक नंबर नहीं लिखूंगा या लेटर नहीं लिखूंगा, तब तक दिस प्लस डजंट मेक सेंस. 6 प्लस क्या मतलब, व्हाट, राइट? So therefore, I need to write some number, like let's say 6 plus 2. So if I write 2, now this plus makes sense. Same logic, ये sign का कुछ मतलब नहीं है till the time I don't write an angle with it. So let's say I write this angle theta, which we are considering right now. अब क्योंकि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं
और 3 साइड्स हैं जिसे हमें रिलेट करना है। सो 3 साइड्स को हम रेशियो में रिलेट करते हैं। अब अगर आपके पास 3 नंबर हैं तो आप उसको कितने अलग अलग तरीके से रेशियो बना सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप 2 के ग्रुप कितने तरीके से बना सकते हो। सो यू कैन हैव a by b, you can have a by c, you can have b by c, then you can interchange, you can interchange, you can interchange. So you all observe that 6 तरीके हैं जिससे हम रेशियो बना सकते हैं। Am I right? Am I clear? Are you all understanding this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So ये जो 6 तरीके हैं, इन 6 तरीकों को अलग अलग डिवाइड किया है। ठीक है, हर रेशियो एक पर्टिकुलर तरीके को रिप्रेजेंट करता है। सो साइन रिप्रेजेंट्स अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। So opposite by hypotenuse है, so that means this will become AB by AC. Cos represents adjacent by hypotenuse, so this will be BC upon AC. Tangent represents opposite by adjacent, so therefore this becomes AB upon BC. अब ये जो 3 हैं, they are not called this, but you, for understanding purpose, you can call these 3 as primary colors, primary ratios. So for example, जब हम बचपन में, आपको अगर स्कूल में आपने ड्राइंग कलरिंग अगर पढ़ी थी तो you must have studied about primary colors, secondary Yes, colors, sir. है ना? So primary colors already होते हैं, उससे हम secondary colors बनाते हैं, ऐसे कुछ कुछ है। तो वैसे ही लॉजिक यहाँ पे है कि ये हमारे प्राइमरी रेशियोज हैं, फर्स्ट 3 रेशियोज, इन्हीं का रेसिप्रोकल कर करके हम बाकी के 3 रेशियोज बनाते हैं। तो जो कॉट है, कॉट बेसिकली टैन का रेसिप्रोकल है। सो देयरफॉर कॉट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सो देयरफॉर इट इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। And this cosec is reciprocal of sine, so therefore it is hypotenuse upon opposite. You all writing these things, no? Yes, sir. Yeah, okay. अब आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने यहाँ पे 3 डैश मारे लेटर्स के नीचे। This is one of the trick, but before we get to this, ये कैसे याद रहेगा कि कौन सा रेशियो, कौन से मतलब कौन सा नाम, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से 2 साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? सो फॉर दैट वी हैव अ शॉर्टकट ट्रिक विच इज ओशा छोटा। अब बहुत लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ। ट्रस्ट मी, ये मैंने स्कूल में सुना था और मुझे वहां से याद है, मतलब स्कूल टीचर ने बताया था। मतलब ये इतना क्या बोलते हैं, इतना वियर्ड है एक्चुअली कि वो याद रह जाता है। इट विल बी अ विजुअल इम्प्रिंट और इट विल बी अ मेमोरी इम्प्रिंट इन योर माइंड कि ट्रिग्नोमेट्री आया मतलब ओशा छोटा क्लिक हो जाएगा आपको। सो कंसिडर ओशा एज अ शॉर्ट गाय ऑफ योर क्लास, तो जिसको आप छोटा छोटू बुलाते हो, हिज नेम लेट्स से इज ओशा। सो ओशा छोटा इज द गाय of your class which will tell you everything about the ratios. How will it tell me? This S is sine, this C is cos, and this T is tan. So S के आगे पीछे OH है, that means it is opposite upon hypotenuse. C is adjacent upon hypotenuse, and T is opposite upon adjacent. So this is the first ट्रिक। हर चीज के लिए ट्रिक है मेरे पास, टेंशन मत लेना। पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का रामबाण इलाज है हमारे पास। Sir, could you please repeat that Osha Chota? Yes, I am. So Osha Chota is a word which helps us in identifying कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से 2 साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। So जैसे S is sin represents O by H, C which is cos represents A by H, and T which is tan represents O by A. तो एग्जाम में पेपर मिले लास्ट पेज पे पेंसिल से ओशा छोटा लिख देना। ओशा छोटा is not counted as cheating, and because you are not cheating, right? It's a trick which you have remembered. So ओशा छोटा will tell you exactly आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। This is the first part of this chapter.
which talks about trigonometric ratios. एक बार हमने ratios इंट्रोड्यूस कर दिए, अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. सो एक बेसिक प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे, मुझे पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, tan which is opposite upon adjacent can also be written as Sin upon cos. very nice, sin theta upon cos theta. yes. और जैसा मैंने कहा था कि cot इसका रेसिप्रोकल है, so therefore obviously cot theta will be cos theta by sin theta. So this is again one important thing, and this is very 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 important, especially in the proving questions which you might have in the end. Okay? Now we come to the second topic. ये तो बस ऐसे ही थोड़ा सा ज्ञान था एक्स्ट्रा. Second topic is reciprocals. जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि तीन जो है वो प्राइमरी रेशियोज हैं, बाकी तीन उनके रेसिप्रोकल्स हैं. सो जो तीन रेसिप्रोकल्स हैं विच इज कॉट थीटा, वो किसका रेसिप्रोकल है? ये एक बहुत ही मेजर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है. तो रेसिप्रोकल्स के लिए ऑलवेज रिमेंबर वी विल लुक आफ्टर द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड. ओके, सो कॉट का थर्ड लेटर क्या है? T, right? T. So T मतलब tan, so therefore it is reciprocal of tan theta. Let's say I have sec theta. Sec का third letter is C. C. So therefore it's a reciprocal of cos theta. Let's say I go for cosec theta. Cosec का third letter is S. So that is the reciprocal of sin theta. या फिर मतलब you can obviously write this as tan theta is equal to 1 by cot theta, या फिर you can write cos theta as 1 by sec theta. हालांकि इनकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, मतलब ये जो मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी. मेजरली हम प्राइमरी रेशियोज को ही हर क्वेश्चन में यूज करते हैं. तो जो बाकी तीन सेकेंडरी रेशियोज मैंने बताए हैं उसे हम हमेशा, या हमेशा नहीं तो 90% केस में हम कन्वर्ट ही कर देते हैं. सो दिस technically is very very important. Okay, so there is a trick to remember कि कौन सा रेशियो किसका रेसिप्रोकल है. Am I clear till here? Yes sir. Okay, any doubts till this concept? No sir. No, याद sir. कैसे No, रखना है, वो sir. ट्रिक क्लियर हो गई ना. ट्रिक क्लियर होना बहुत जरूरी है. Okay, third we go on to complementary ratios. अब ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो आपकी मॉम आपको करती है, मतलब बाकी लोग तो करते हैं नहीं करते हैं हमें पता नहीं. मॉम इज वेरी स्वीट ना, शी ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स, आई डोंट नो व्हाई शी डज. एनीवेज, सो कॉम्प्लीमेंट्री ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट है जो हमने एंगल्स के बारे में बचपन में पढ़ा था. सो कैन एनीवन इन द क्लास टेल मी व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? The angles whose sum are 90 degree. Very good. The angles whose sum is 90 degree. And there is one more similar type of angles. Supplementary. Supplementary. Angles whose sum are Excellent. 180 degree. Very nice. Who's this brilliant guy who's answering all this? कौन था ये? I was on the other screen, so I didn't know. Sir Advik. Advik. Okay, good one, Advik. So coming to complementary ratios. तो जैसा हमने देखा, जैसा आप सभी लोगों को पता था, आपने आंसर किया हो ना किया हो, आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल न्यू व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो एंगल्स आर. सो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, सो आई कैन से दैट इफ वन ऑफ द एंगल इज थीटा, then definitely the other angle has to be 90 minus. The other will be 90. Thank you. So this we already know. अब होता क्या है, इस तरीके से इन 6 रेशियोज को हमने पेयर किया है कि उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो वैल्यू होती है वो सेम होती है. मुझे पता है, मैंने आई स्पोक सम ग्रीक फॉर यू. व्हाट आई एक्चुअली मेंट इज दिस. जब हमने 6 रेशियोज के बारे में देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे को आ रहा था हर जगह पे, साइन कोसाइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट. तो ये जो को आ रहा था, दिस को इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. ये वो वाला को है. सो इसे याद रखने का ट्रिक है को. तो जहां पर भी को आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है. मतलब क्या कि जो कॉस थीटा है
that will be equal to sine of 90 minus theta. And vice versa, obviously, कि sin theta will be cos 90 minus theta. अब इसका practically मतलब क्या है वो भी मैं समझाऊंगा. But first let's write this down. दूसरा मुझे को दिख रहा है cot. तो cot किसका complementary होगा? Tan का. So Tan cot of theta. theta will be tan 90 minus theta. Or you can obviously say that tan theta is cot 90 minus theta. Similarly, जो लास्ट में एक को दिख रहा है which is cosec theta will be complementary of sec. So therefore it will be sec of 90 minus theta, which is again you can say that sec theta is cosec 90 minus theta. Am I clear till here? अब इसका यूज क्या है, अब इसका मतलब क्या है पहले वो भी हमें पता होना चाहिए कि cos of let's say 30 degree will be equal to sine of 60 degree, या फिर cos of 10 degree will be equal to sine of 80 degree, या cos of 72 degree will be sine of 18 degree. Are you all understanding what I'm trying to say from this? Yes, sir. So this is complementary ratios. Okay. We also have a table of standard ratios. We'll come to that. Before that, I'm just taking up the topic of identities. So there are 3 trigonometric identities which we learn in this chapter and we use forever. उसमें से जो first identity है, that is तो extremely useful, मतलब हद से ज़्यादा useful है ये. क्या है वो? Sin square a theta plus cos square a. Cos square is equal to 1. equal to 1. Yes, no. Yeah. A लिखो या theta लिखो, कैसे भी आप लिखो. I usually write theta. So sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second, अच्छा इससे आप ये भी देख सकते हो that you can write sin square theta as 1 minus cos square theta या cos square theta as 1 minus sin square theta. तो मैं वो सब लिख नहीं रहा हूँ, but obviously we can use that also. Okay. Second is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. अब obvious ही बात है कि you can write sec square as 1 plus tan square या you can write tan square as sec square minus 1. वो सब भी आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से. थर्ड, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Again, you can manipulate this. You can write cosec square as 1 plus cot square, and you can write cot square as cosec square minus 1. So all that you can do those manipulations. तो आप अपने इसमें लिख भी लेना बाद में यहाँ पे साइड में. So हमने 4 चीजें पढ़ी हैं. पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, जिसे याद रखने के लिए व्हाट वाज द ट्रिक? ओशा छोटा. ठीक है, ये जो सारे ट्रिक्स हमने देखे हैं, मैं ये ट्रिक्स आपको एक अलग कलर से बता देता हूँ. आई जस्ट हाईलाइट दिस सो दैट यू नो. So this is the first trick. For trigonometric ratios, I used Ocha Chota. For reciprocals, I use this third letter wala concept. So third letter is very useful for finding out the reciprocals. For complementary ratios, I use this 2 letters co. जहाँ पे co आ रहा है, we get complementary. And fourth में we have identities. तो fourth में तो we directly have identities. वहाँ से आपको याद रखनी है. ये identities के proof में हम नहीं जा रहे हैं, but you can obviously prove it by using these ratios. तो आप sin को opposite upon hypotenuse लिख दो, cos को adjacent upon hypotenuse लिख दो. जब आप इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको न्यूमरेटर हो जाएगा अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. डिनोमिनेटर होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर, बट न्यूमरेटर भी पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस स्क्वायर ही बन जाएगा. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दिस विल बी o square by h square plus a square by h square, which because of LCM will become o square plus a square upon h square, and numerator is again Pythagoras theorem के हिसाब से h square by h square. So therefore it must be equal to. And same logic you can use for proving the other 2 identities as well. ये important नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. एग्जाम में ये important है कि आप इन 3 को कैसे और मैनिपुलेट कर सकते हो. तो in your notebooks do write sec square theta as 1 plus tan square theta, cosec square as 1 plus cot square theta, and so on. Okay.
So are you all clear with these 4 concepts about the chapter? Yes, Yes, sir. sir. Any doubt? Yes, sir. No, sir. Does it look easy? I heard a no. I Yes, heard a sir. no. I heard a no. Sir, I told no for any doubt. अच्छा अच्छा, ओके ओके. सो नहीं, अगर नो है किसी का तो प्लीज टेल मी. देखो ट्रिग्नोमेट्री ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. तो ऐसा ना उसके साथ वो पर्सनल बॉन्ड है वो मेरा. सो देयरफॉर आई, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं है ना तो आई एम लाइक नहीं मैं समझाऊंगा. सो देयरफॉर अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क. मेरा ऐसा लाइफ का एम है कि मैं दुनिया में सबका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा सब. सो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज आस्क. I want trigonometry to be one of your easiest chapters. Sir? No, sir. Understood, ma'am. Sir. Sir, if you are comfortable with P, B and H, so can we use that instead of opposite and adjacent? Sir, I guess you are on mute. Can you hear me now? Can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. So हाँ, PDM को लेके someone was asking ना ये Yes, perpendicular perpendicular base and hypotenuse है ना. Yes, तो sir. perpendicular base hypotenuse का प्रॉब्लम क्या है मैं वो समझा देता हूँ. उसमें होता ये है कि अगर मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, let's take for example, and I take this as the perpendicular side, this as the base and this as the hypotenuse. तो यहाँ तक तो बहुत इजी है, आप समझ सकते हो कि हाँ ये बेस है क्योंकि नीचे है, ये परपेंडिकुलर है. बट होता क्या है अगर आपको ऐसा ट्राइंगल दें और इस एंगल के बारे में पूछे, इफ दे आर आस्किंग अबाउट एंगल ए, तो प्रॉब्लम जो हो जाता है कि उस लॉजिक में हमें इसे P लेना चाहिए और इसे B लेना चाहिए टू गेट करेक्ट आंसर्स. बट स्टूडेंट्स वहां पे मिस्टेक कर देते हैं. स्टूडेंट्स इसे ही P रखते हैं, इसे B रखते हैं और सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं. साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, टैन कॉट हो जाता है. सो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग. सर मैंने ऐसे किया, मतलब जिस साइड पे 90 डिग्री और थीटा रहेगा वो साइड बेस हो जाएगा. हाँ, सो ये लॉजिक, हाँ मैं वही कह रहा हूँ. तो ये वाला जो लॉजिक है ना वो एग्जाम टाइम पे मैंने देखा है मेनी स्टूडेंट्स फेस सम इशू देयर. तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ. बट अगर आप फिर भी वैसे ही पढ़ा है आपने, so please go ahead. There is no harm in going ahead with that. It's not wrong. It's not anything of that sort. Please go ahead with that. Okay? अगर वैसे पढ़ा है तो go ahead with that. Otherwise, अगर नहीं पढ़ा है, if you can still mold yourself, I personally find this better. Okay? Shivang has. Okay, Shivang, can you elaborate this? Shivang has said if we are comfortable with PBH, we can use Pandit Badri Prasad upon Har Har Bole. So yes, sir, that is. So that is if we are comfortable with perpendicular base and hypotenuse. It says that the first letter of Pandit Badri Prasad, that is PBP upon HHB. So we can recognize that P upon H, B upon H and P upon V, that is reciprocal. Ah, that is sine, that is tan, that is sine, that is cos, that is tan. Nice, cool. Got it. सर एक और ले सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. नाइस. वैसे भी नेशनलिज्म इज ऑन अ राइज. आई एम श्योर जिस तरीके से आप लोगों की लाइफ खराब की है हिस्ट्री टीचर ने फ्रेंच नेशनलिज्म एंड यूरोप नेशनलिज्म पढ़ा के. आई मीन नो ऑफेंस टू एनी हिस्ट्री टीचर, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ मैं, मतलब मेरी तो खराब की है भाई. इतना नेशनलिज्म पढ़ा हमने वहां पे. ट्रस्ट मी 30 साल बाद लोग इंडिया का नेशनलिज्म पढ़ेंगे. बाय द वे नेशनलिज्म इज इन हाई इन इंडिया. Insane. Okay. Which is good. I mean, I'm not against nationalism. Please don't say कि यार ये सर कैसे करेगा. I'm एकदम pro nationalism. Trust me. मतलब आज का मैच मैंने सुबह 5 बजे उठ के नहीं देखा, बट हाँ लास्ट का पार्ट देखा मैंने उठने के बाद. By the way, congratulations to everyone for today's victory. Coming to trigonometry and one last concept which is left.
So please take a screenshot of this if you want. This covers almost everything in the chapter. And now the last part of the chapter is the value of trigonometric ratios for standard angles. So trigonometric values for standard angles. अब ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है इसमें, 5 एंगल हैं जिन्हें उनको लगा कि अरे यार इनकी तो वैल्यूज बड़ी सॉर्टेड है, बड़ा राउंड फिगर टाइप की वैल्यू आ रही है, तो इन्हें ना हम स्टैंडर्ड एंगल्स बना देते हैं। सो इस तरीके से 5 एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स बन गए। क्या है वो 5 एंगल्स, वो देख लेते हैं। सो यू हैव 0, you have 30, you have 45, you have 60 and you have 90. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रायंगल्स मतलब हर तरह के ट्रायंगल्स को हम रिलेट कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल्स आर नॉट कन्फाइंड फ्रॉम 0 to 90, सो यू कैन हैव ट्रिग्नोमेट्री एनी एंगल। आपके दिमाग में जो नंबर आ रहा है आप उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो। इट कैन बी एन एंगल मोर देन 90, इट कैन बी एन एंगल less than 0, negative angles, ये सब हम अभी नहीं पढ़ेंगे। Thankfully, we only have from 0 to 90. In grade 11, you obviously will study. Sorry? But the triangle is necessarily to be a right angle triangle, right? Yeah, for standard 10 purposes. Okay, sir. Sir, and आगे भी जब राइट एंगल ट्रायंगल बता रहा हूँ, आगे भी जब हम राइट एंगल ट्रायंगल हर तरह के एंगल को हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर डाल सकते हैं। ये आप 11th में पढ़ोगे, so don't get into that. हाँ, अगर और कुछ डाउट है प्लीज। यस। No sir, I just wanted to ask that can trigonometry be done without 90-degree angle then? हाँ, so that's what I'm saying. So it can be in 11th you'll study it better. एक 12th स्टैंडर्ड में एक और चैप्टर आएगा with the name solutions of triangle. वहाँ पे तो आप और डीप में स्टडी करोगे इसके बारे में। But like coming back to our grade, पहले हम 10th को फाड़ते हैं, अच्छे ग्रेड्स लेके आते हैं, आगे देखेंगे बाद में। सो साइन थीटा, साइन थीटा वैल्यूज अब कैसे निकालोगे? अब इसकी ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था हर चीज के लिए ट्रिक है, इसके लिए भी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। द ट्रिक इज यू राइट डाउन ऑल द होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4। क्योंकि 4 सबसे लास्ट में आया, यू डिवाइड एवरीथिंग बाय 4। 4 4 4 4 4, यू टेक स्क्वायर रूट। डन, साइन की वैल्यूज आ गई। सो साइन थीटा की वैल्यूज आ गई आपके पास। 0/4 इज 0, उसका स्क्वायर रूट भी 0। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। 2/4 हो जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट लूंगा तो आएगा 1/√2। 3/4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो आएगा √3/2। 4/4 becomes 1, square root is again 1. So sin theta की वैल्यूज है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1। अब ऐसे ही नंबर बताओगे तो याद रखना मुश्किल है, बट इसे अगर आप टेबल को 3 बार घर पे बना लोगे, एग्जाम में भी जब आंसर शीट मिल जाती है और 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, तो लास्ट पेज पे रफ पेपर में यू कैन ड्रॉ दिस टेबल। सो क्या करना है हमें? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और उनके स्क्वायर रूट्स। रिपीट आफ्टर मी, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एंड देन उसके स्क्वायर रूट। राइट। सो यहां से मुझे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाता है विच इज साइन। कॉस के लिए क्या करेंगे? So we can just revert it from that is the value of 90 will become the value of 0. के लिए भी रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब ये हो जाता है 1, ये हो जाता है √3/2, ये 1/√2 ही रहता है, ये हो जाता है 1/2, ये हो जाता है 0। अब अगर आप देखो तो हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो पढ़ा था और मैंने बताया था कि cos ऑफ थीटा sin ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे दोनों रेशियोज इक्वल होते हैं। तो अगर आप देखो तो साइन का जो 0 पे वैल्यू था, cos का वो 90 पे वैल्यू है। sin 30 cos 60, sin 45 cos 45, क्योंकि 45 एक दूसरे का 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री है। sin 60 cos 30, sin 90
cos 0. So this is the logic behind reversing. Third, we have tan theta. तो जैसे हमने tan theta के बारे में starting में पढ़ा था, it is sin by cos. तो you just divide them. Or you can also say it's sin का numerator upon cos का numerator. क्योंकि denominators cancel हो जाते हैं. So it becomes 0 by 1, which is 0. 1 by 2 divided by root 3 by 2 में 2 और 2 cancel हो जाएगा. You will get 1 by root 3. 1 by root 2 upon 1 by root 2, everything gets cancelled up. You get 1. Root 3 by 2 divided by 1 by 2, again 2 cancel. You get root 3. 1 upon 0. Now we have studied that denominator can never be 0, so it is not defined. In some books, it's also written as infinity. Now, actually, not defined and infinity are different concepts. We don't have that much of bandwidth of time to discuss this, but yeah, so that is it. That is it. Next is cot. तो जैसा हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होने की वजह से कॉस में हमने रिवर्स किया, सो कॉट भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉट के लिए भी हम रिवर्स कर देंगे. टैन के लिए हमने क्या ट्रिक यूज की थी? टैन के लिए हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया था. सो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, देन ये हो जाएगा रूट 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 by root 3 एंड ये हो जाएगा c. इज दिस मच क्लियर? Yes, sir. फिफ्थ इज sec थीटा. जैसे हमने देखा था sec, क्योंकि c आ रहा है तो वो cos का रेसिप्रोकल है. सो रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन दैट नंबर, सो 1 अपॉन 1 1. फिर रूट 3 by 2 का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 2 by root 3. 1 by root 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट 2. 1 by 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2. 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 0 एंड 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. सो sec आपको कहां से मिलेगा? 1 अपॉन cos. बताओ ना सर प्लीज. Sec is reciprocal of cos. 1 by cos. Yeah, so therefore it is 1 by cos. So हम लोग cos को reciprocal ले रहे हैं. Okay. Now next is cosec. So cosec theta आप sin का reciprocal भी ले सकते हो, or else you can again do that. You can reverse. क्योंकि ये complementary भी है. So therefore this becomes not defined. This becomes 2. This becomes 2. This becomes 2 by root 3, and this becomes 1. So this is your table, trigonometric table. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So instead of So- remembering all sine, all cos, sir, I remembered it angle wise. Yes, Is you it? just remember, my suggestion always is just remember sine. Sine अगर तो आ जाएगा. Okay, sir. मैं तो एक्चुअली सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि भाई एग्जाम में पेपर में बना लो रफ पेज पे. So this is the table. Please write it down. Sir, I have a doubt. If we take 90-degree angle triangle and we take sine theta, that's sine 90, then we get it is opposite by hypotenuse. That will be the same size, that is AC upon AC, and we get it 1. Now Right. talking about tan. Yes, sir. Now if we take tan theta and we take opposite upon adjacent, and suppose we take BC as the opposite side, then we get AC upon BC is not defined from the table. So BC we get 0. So how is that possible? Okay, wait, I'll come to that. Sir, because if cos theta becomes 90-degree, then our altitude and hypotenuse becomes the same. They coincide each other. Okay. I'll come to that. Just draw this table. So I also have a doubt. So Yeah. if any in questions they ask of the means a question is given in which we should use the values of tan 90 or cot 0 degree or sec 90, then what we should do there? Which values we should take? Sorry.
Sir, means if I we are didn't getting get you. If they ask, if they ask a question, sir, that means Mhm. questions, no, application based questions are there more. So if they're Right. asking for tan 90, means it is coming for tan 90 or cot 0 degree or sec 90, Mhm. they are not defined. So what values you will take there? We take not defined. We write as not defined. So the answer will be what coming, sir? So answer will be not defined. Okay. So you write not defined only. वही बता रहा हूँ मैं. Exam में not defined ही लिख दोगे. Okay. Have you guys made this table? Everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. So this was the entire chapter. I know I told 15 minutes and we have taken half an hour. But now, frankly, I'm asking, do you guys think now the chapter has become comparatively much more easier than you were thinking before we started the chapter? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I'm very happy now. But मुझे सर थोड़ा सा पर्सनल टाइप बॉन्ड है मेरा ट्रिग्नोमेट्री के साथ. So now that you guys are so comfortable, so what I will suggest you all is you take this chapter up and first of all go through all the solved example and exercise question of your respective textbooks, state board or CBSE or ICSE, whatever your board is. Take up the solved examples and exercise questions of your textbook. In the next lecture, we will be discussing all the doubts of this chapter, trigonometry, whatever you have from your textbooks or from any other books you solve. And I will be also taking some hot questions on trigonometry. So that is what we are going to do in the next lecture. Now for the next 5-10 minutes, I'll ask you all if you have any difficulty in this chapter or any in general common doubt. Sir, I asked you about that 1090. You asked me about 1090. Also, Shivang also messaged me a question. Wait. Angles of elevation of top of a candle. That one, नहीं, वो तो विनय ने पूछा मुझे. Vinay, I'll clarify your question in the next lecture. Applications पे based है. So I'll clarify in the next class. Shivang, what is your Shivang, your doubt only is that 90 वाला क्या? No, sir. My doubt is another. Okay, so पहले मैं That is about regarding then proving. we'll go to your doubt. That is about? The proving. अच्छा, proving. Okay, so we will come to that. 90 वाला concept मैं पहले समझा देता हूँ. Now what happens is when you have to find out any values for 0 degree. Again, ये आपके examination point of view से important नहीं है. So अगर आपको ये नहीं भी समझ में आता है तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है. What this mean is, let's say this angle is theta. This is your opposite side. This is adjacent side. This is hypotenuse. So 0 degree का मतलब है this side is coming down. Now, when this comes down, what happens? When this theta is tending to become 0 degree, tending matlab moving towards 0 degree, your opposite side is moving towards 0 centimeter, a 0 unit, and your hypotenuse is moving to become equal to adjacent. So your opposite becomes equal to 0 and your hypotenuse becomes equal to adjacent. So therefore 0 के केस में बाकी आप ये सारी वैल्यूज डाल दो, आपको आंसर आ जाएगा. 90 डिग्री के केस में क्या होता है, ये थीटा जो है, फॉर दिस थीटा टू बिकम 90 डिग्री इट हैज टू मूव इन दिस डायरेक्शन. सो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ये जो थीटा है वो इसकी तरफ, ये 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रहा है टू बिकम 90. सो ये जो आपका ए है, सो व्हेन योर थीटा बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री, योर एडजेसेंट साइड बिकम्स इक्वल टू 0 and your opposite side becomes equal to hypotenuse. So therefore जब आप tan 90 निकालते हो तो tan 90 is opposite upon adjacent. So because adjacent is 0, therefore it becomes not defined. And for all the other respective ratios. So you can write it down in your notebook if you want, this part.
अगर ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। सो दिस वाज वन थिंग एंड व्हाट्स योर डाउट शिवांग? So can I say it? Yes, please. So that is 2 is out of the bracket, and inside the bracket that is sine 6 theta plus cos 6 theta, bracket close. Just a minute. Yes, 2 sine 6 theta plus cos 6 theta minus 3 inside the bracket that is sine 4 theta sine 4 theta plus cos 4 theta. So that is sine raised to the power 4 theta. Sorry. That is the 4 and 6 are the power that is raised to sine and cos respectively. Acha, okay. Sorry, my bad then. So it is 2 sine raised to 6 theta. That's what you're saying? Yes, sir. Plus cos raised okay, to cos 6 raised to 6 theta minus 3 times sine raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta. अच्छा क्या करना है इसमें आगे? plus 1 equals to 0 prove करना है सर. Yes, what next? Equals to 0 prove करना है. Okay. So what I'll tell you is, everyone please write down this question, and I will want you all to try this question. I'll tell you how is this question is done. Okay. अब इसमें करना क्या है मैं वो समझा रहा हूँ. करना आप लोगों को खुद एक बार ट्राई करना because it's a very good question. करना क्या है? Try to break this down in terms of sin square. मतलब ये जो sin raised to 6 है उसको आप sin square का cube, cos raised to cos square का cube ऐसे लिख दो और a cube plus b cube का फॉर्मूला लगाओ. If you guys don't remember, a cube plus b cube you studied last year is a plus b into a square minus ab plus b square. So you can apply that formula where your a will be sin square theta and b will be cos square theta. Similarly, यहाँ पे आपका हो जाएगा sin square का square और cos square का square. Again, you can use a square plus b square as a plus b the whole square minus 2ab. So यहाँ पे again a will be sin square theta and b will be cos square theta. So use these two formulae and just try to replace it and cancel things off and you will get your answer. You need to prove it equal to 0. And I want you all to try this question. We'll discuss it in the next session. Okay, sir. So Okay. I thought of something else to do this question. You thought of something else? Please go on. Who's this? The second term, that is minus 3 sine 4 theta plus cos 4 theta, can't we multiply it by sine square theta plus cos square theta? Yeah, we can. And then it will be in the form of aq plus bq minus 3ab into a plus b. Then then things will get cancelled up. Yes, you can do that. Try that also. अच्छा एक चीज और याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री के 80% क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इन at least 3 to 4 different ways. Every method is correct. So आपको जो मेथड क्लिक होता है, प्लीज यूज दैट मेथड एंड गेट द आंसर. You proving it is what is important. Use any method of your choice. Okay. So I suppose now you know what exactly has to be done. Go through all the solved examples and exercise questions of your textbooks, and in the next lecture we'll discuss up all the doubts, and I'll also take some good level of proving questions. Am I clear to all? Yes, sir. Sure, Yes, sir. Yes, Thank you, sir. Great. Sir, I have You doubt guys, that wish you can a very I good just- night. Thank you. Sorry, Sir, someone saying something? Sir, I have a doubt. Means, can you see my? Just a minute, sir. Sir, can you see my video? Yes, I can.
Sir, can't means the same thing that 90 degree doubt. Can't we take angle B as 90 degree? What will be your adjacent angle in this case? No, sir, I'm taking theta as 90 degree. You're taking theta as 90 degree. Yes, sir. Okay. And the only angle, And? only 90 degree angle in the triangle is the theta. Other two are means less than 90 degree. Mm-hmm. Mm-hmm. So, what will be opposite and what will be adjacent? Opposite will be the hypotenuse, right? Yes, sir. And so you have taken adjacent like this. Okay. So, point one, it doesn't work like this because you need an angle which is which are giving you the two sides, opposite, adjacent, and hypotenuse as separate sides. So you cannot have a clash in that, because over here you cannot strictly define which will be your adjacent side. That is one flaw. Second, in cases of getting a 90 degree, we always try to go for converting our theta to 90 degree. So you take any other angle and try to make that 90. That is how things work. Okay, sir. Okay, so taking this, the major flaw is because you don't have clarity as in which side will be your adjacent side. That's the major problem in this. Okay, also, in standard 11, you will learn graph, and on graph you will be plotting this sine and cos and tan and everything. There you will get much better clarity because they will be using some Pythagoras, some Pythagoras theorem and coordinates and everything. So you'll get better clarity as in why this was not possible. But the major reason is what I have given you. Okay, sir. Yeah. Cool then. See you guys. Good night, everyone. Please take care. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Goodbye, sir. Goodbye. Bye-bye.